कामरान सुल्तान साहब की जानिब से और अपनी जानिब से आप तमाम को हमारे आज के इस लाइव वर्कशॉप के अंदर के जिसका टाइटल है डिस्कवर द पावर ऑफ हिप्नोसिस के अंदर मैं खुशामदीद कहता हूं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको अपने मोहतरम जो मेरे ट्रेनर हैं कामरान सुल्तान साहब, उनका आपको तारुफ कराता चलूं। कामरान सुल्तान सर लाइसेंस मास्टर प्रैक्टिशनर है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के, सोसाइटी ऑफ एनएलपी के, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन कोच हैं, सर्टिफाइड ह्यूमनिस्टिक एनएलपी कोच हैं, सर्टिफाइड फायर इंस्ट्रक्टर कोच, सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर ऑफ हिप्नोसिस एंड सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। कामरान सुल्तान साहब एक्स कंट्री सुपरवाइजर भी है होजे सिल्वा अल्ट्रा माइंड ट्रेनिंग के भी। कामरान सर तकरीबन 1997 से अपनी इस माइंड रिलेटेड नॉलेज को आवाम के अंदर सर्व कर रहे हैं और इन्होंने अब तक तकरीबन 35,000 घंटे की ट्रेनिंग जो कि एनएलपी और हिप्नोसिस से रिलेटेड है वो कंडक्ट की हुई है अब तक। लाइसेंस एनएलपी प्रैक्टिशनर के इन्होंने 93 बैचेस पास आउट किए हुए हैं और लाइसेंस मास्टर प्रैक्टिशनर की ट्रेनिंग सर ने 39 टाइम्स कंडक्ट करवाई हुई है और एनएलपी की बदौलत कई लोगों ने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने में सर से मदद ली हुई है। कामरान सर कई लोगों को अराउंड द वर्ल्ड कोच कर चुके हैं जिंदगी के किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। हर मामले में कामरान सर ने कई लोगों को कोच किया है और उन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है। कामरान सर के जो अपने ट्रेनर्स हैं वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास और रिनाउंड ट्रेनर्स हैं, जिसमें डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर जो कि को क्रिएटर हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के, एंथनी रॉबिन्स, जॉन लवेल, जोसेफ रेगो, पॉल मैकेना, रिच लेटविन, जो वाइट, जूली सिल्वरथॉर्न, मेगली पेशा, रसल पॉट्स, जो कॉपर, पीटर सील और एलेक्स डी सिल्वा। और मुझे इस बात का आज ऑनर है कि मैं अपने मोहतरम असातिज़ा कामरान सुल्तान साहब के साथ मिलकर ये ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग के इख्तिताम पर हम आपको एक और भी ट्रेनिंग ऑफर करेंगे। तो मुझे इस चीज का ऑनर है कि मैं अपने मोहतरम उस्ताद के साथ आज ट्रेनिंग आपको कंडक्ट करवा रहा हूँ और मुझे खुशी इस बात की है कि तकरीबन मैं 2017 से कामरान सर के साथ मुंसलिक हूँ। मैंने अपनी एनएलपी और हिप्नोसिस की तमाम ट्रेनिंग का आगाज कामरान सर से किया 2017 के अंदर और इन 5 वर्षों के अंदर मेरी जिंदगी 360 डिग्री चेंज हो गई है। मेरी हेल्थ, मेरी वेल्थ, मेरे रिलेशनशिप्स, इन तमाम ट्रेनिंग की बदौलत जो मैंने कामरान सुल्तान सर से हासिल की उसकी बदौलत में अपनी जिंदगी को एक अगले लेवल पर ले जाने में कामयाब हुआ। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि कामरान सुल्तान सर ने मुझे इस लायक जाना और इस लायक बनाया कि मैं उनके साथ ट्रेनिंग कंडक्ट कर सकूं। एक अच्छे टीचर की, अच्छे ट्रेनर की, अच्छे मेंटोर की ये खूबी होती है कि वो अपनी नॉलेज को अपने शागिर्दों के अंदर इस तरह से ट्रांसफर करते हैं कि उनका शागिर्द भी इस लायक हो जाता है कि बहुत जल्द उनके साथ स्टेज शेयर करता है। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि जब आप भी कामरान सर के साथ जुड़ेंगे तो जिस तरह मैं 5 वर्षों के अंदर यहाँ तक पहुंच गया, और हो सकता है कि आप मुझसे भी पहले, मुझसे भी जल्दी, हो सकता है 2 या 3 सालों के अंदर भी आप अपने आप को इस लायक बना दें कि आप भी कामरान सर के साथ मुस्तकबिल में ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हो और मुस्तकबिल में स्टेज शेयर कर रहे हो। कामरान सर के साथ जो ट्रेनिंग्स मुझे करने का मौका मिला उनमें मैंने लाइसेंस मास्टर प्रैक्टिशनर किया एनएलपी का, सर्टिफाइड हिप्नोसिस ट्रेनर, सर्टिफाइड हिप्नो काउंसलर, सर्टिफाइड लाइफ कोच, सर्टिफाइड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनर सिंगापुर, सिल्वा अल्ट्रामाइंड ईएसपी ग्रेजुएट और मैं क्वांटम लीप ग्रेजुएट भी हूँ। और जिस तरह मैंने बताया 2017 से मैं कामरान सर के साथ मैंने अपनी लर्निंग का आगाज किया और उसके बाद मेरी एक लर्निंग की जर्नी शुरू हो गई।
मेरी पर्सनल लाइफ और पर्सनल सर्च और पर्सनल डेवलपमेंट की एक जर्नी का आगाज हो गया। और सिर्फ थोड़े से टाइम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पूरी जिंदगी को तब्दील करने में कामयाब रहा। कामरान सर की हेल्प की बदौलत, उनके सुपरविजन की बदौलत, उनकी गाइडेंस की बदौलत और ऑब्वियसली अल्लाह ताला की रहमतों की बदौलत। मेरे जो वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स थे जिनको साथ मुझे मौका मिला ट्रेनिंग हासिल करने का, उसमें मिस सुमेरा रज़ाक, रिच लेटविन, टी हार्वेकर, मैक एट्रम, ब्लेयर सिंगर, एलेक्स मेंडोसियन, रॉबर्ट ट्रिपल, मार्जन होल्डन। 2017 से जब से मैं कामरान सर के साथ मुंसलिक हुआ, अपनी नॉलेज को माइंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स के अंदर मैंने एनहांस किया और खास तौर पर हिप्नोसिस की मदद से मैंने तकरीबन 400 लोगों की मदद की है इन 5 वर्षों के दौरान। और इन 400 लोगों के साथ जो मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। और इंशाल्लाह अपनी जर्नी हम इस प्रोग्राम के अंदर वक्तन फवक्तन में आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँगा। सो लेट्स डिस्कवर द पावर ऑफ हिप्नोसिस। अस्सलाम वालेकुम कामरान सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू वेरी मच रमजान, इतने लंबे सर आपने आपकी आवाज नहीं आ रही। इंट्रोडक्शन कराया। इज इट बेटर? अब आ रही है आप लोगों को आवाज? ओके सर, एक सेकंड शेयर कर रहे हैं से। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू वेरी मच रमजान, आपने इतना लंबा चौड़ा मेरा इंट्रोडक्शन कराया। बाय द वे, आई एम नॉट अ मास्टर प्रैक्टिशनर, आई एम अ मास्टर ट्रेनर ऑफ ट्रेनर, यस सॉरी सर। आपने मुझे आपने स्टार्ट में आप पीछे कर दिया था। आई गेट दैट। ओके, perfectly okay, we all make mistakes. So welcome everyone. Before we start, I see there are a number of people, कुछ मेरे जाने पहचाने नाम और चेहरे भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं और कुछ नए लोग भी हैं। So where are you guys from? कहाँ पर हैं आप लोग? दुनिया के किन किन हिस्सों से, किन किन शहरों से आप कनेक्टेड हैं? If you can just type your city in chat, that would be really great. हैदराबाद इंडिया, ओहो। फैजान फ्रॉम पेशावर, इरम फ्रॉम कराची, हिना फ्रॉम कराची, डॉक्टर सादिया, शहनाज कासिम, जोहरा। आई थिंक पीपल आर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। कनाडा से हैं, वाओ। अब्दुल्ला साहब फ्रॉम कनाडा, अदील फ्रॉम Mr. दुबई, Saga. Okay. माशाल्लाह। Okay, and how many of you know hypnosis? Type 1 if you know, it's like if you know hypnosis. Okay, type 1. Okay, Faizan says yes, Usman says yes, we know a little bit. Amir Ali says yes, Shazia, Dr. Sadia, Adil. Okay, Okay, and those who say no. those who think I don't, okay, type 2. Okay, so Shuja says I don't know. Nur Ali says no. Perhaps Yasir you says do. no. Yeah. You just don't realize that yet. Wow. Okay, so Adil attended my 2 days workshop. Adil, welcome. Good to see you again. I think after a long time, it's been many years. मैंने लाहौर में program conduct कराया था. So I see both 1 and 2. So it's good that we have some people who know, and those people who don't know, we will be giving you some basic definitions. Those of you who are in our WhatsApp group, आपको already हमारी मेरी कुछ videos मिली होंगी YouTube के ऊपर, जहाँ पे हमने कुछ basic definitions discuss की थी and share की थी, and we will be sharing some more definitions. So how about you, Ramzan? You can start with the basic definition. And so let's begin. What is hypnosis? Hypnosis क्या है? Hypnosis कुदरती तौर पर रूनुमा होने वाली हमारी जहन की उस कैफियत का नाम है जहां पर कही जाने वाली बात का असर सुनने वाले के जहन पर कई गुना बढ़ चढ़कर और भरपूर तरीके से होता है। So basically होता क्या है कि when you are in an awakened state, आपका जो लॉजिकल, एनालिटिकल, क्रिटिकल जहन होता है ये एक्टिव होता है, ओके।
और जब आप रिलैक्स करते हैं, किसी भी मैकेनिज्म के जरिए रिलैक्स करें, जब आप अपनी तवज्जो, अपनी अटेंशन किसी एक चीज पे फिक्सेट करते हैं. सो फॉर एग्जांपल, इफ यू आर वाचिंग अ टेलीविजन, इफ यू आर वाचिंग अ प्रोग्राम, इफ यू आर लाइक वाचिंग दिस राइट नाउ ऑन यूट्यूब, even if you're watching a recording of this, if you're focused on a single task, जब आपका माइंड जो है किसी एक चीज पे फोकस होता है, उस वक्त जो आपके जहन की कैफियत होती है विद योर आईज ओपन, जो कैफियत आपके ऊपर तारी होती है, वो कैफियत हिप्नोसिस की या ट्रांस की कैफियत होती है. यानी जिसे हम फिक्सेशन ऑफ अटेंशन या उर्दू में कहें तवज्जो एक चीज पे जब मरकूज होती है. ओके, ये एक ऐसी कैफियत होती है जिसमें आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो ऑल्टर होना शुरू हो जाती है. एंड व्हाट डू वी मीन बाय दैट? इस वक्त, इस लम्हे में, as you are sitting here and listening to my voice and seeing all of this, there are certain things which are in your awareness and there are things which are not in your awareness. For example, if I ask you कि आपका like बचपन आपके स्कूल में पढ़े हैं, आप बचपन में किस मोहल्ले में रहते थे, आपका बचपन में पसंदीदा खेल क्या होता था? Now, in order to answer these questions, you will have to think. And in order to think, you will have to go in your mind. And as you're going in your mind, आपकी जो awareness है, वो external से internal की तरफ shift होना शुरू होगी. And if I keep on, directing your attention from where you are to where I want you to go, you will start going into a hypnotic state. Okay. और इसके लिए मुझे आपको कोई पेंडुलम दिखाने की जरूरत नहीं है. मैं I've been learning, I consider myself only a student of hypnosis. I've been learning it since 1983, 84. Honestly, I don't remember exactly. It was 1983 or 84. I was like young. And तो मुझे कहीं किताबों में एक बड़ी पुरानी एक किताब मिली, और वो किताब जो थी, it was a course, a correspondence course, a home study course उस जमाने का, which was published back in 1912 by some latent light culture in India. वो जो किताब थी, that's where I first started learning about hypnosis. और honestly उस वक्त मेरे जहन में ये था कि यार टीचर्स को hypnotize कर देंगे स्कूल में, जरा जिंदगी आसान हो जाएगी. And that's how I started reading that book, and I started learning about hypnosis. And जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, and I started practicing, the first person I worked with was my own mother. So I started using it, and I found it's a very different thing. It's like it's not something जो कि हम जासूसी कहानियों में सुनते आए हैं या फिल्मों में हम देखते हैं. It's a very, very different thing. So that's when I started learning hypnosis. So, and I've been teaching since 1997, as Ramzan told you. So, it's like there are many definitions of hypnosis. मेरी अब जो definition है, मेरी अब जो understanding है hypnosis के बारे में, वो बहुत ही simple, बहुत ही सादा सा, वो ये है. हर वो बात, हर वो अच्छी या बुरी, positive or negative, that's besides the point. हर वो बात जिसको मैंने और आपने बगैर question किए accept किया है, वो चीज बुनियादी तौर पे हिप्नोसिस है. ओके, बिकॉज हमने अपनी लॉजिकल, क्रिटिकल, एनालिटिकल थिंकिंग के बगैर हमने किसी भी आइडिया को जब एक्सेप्ट कर लिया. सो फॉर एग्जांपल, somebody said something good about you and you accepted that idea. Your mother said, हाँ मेरा बच्चा, मेरी बच्ची बहुत प्यारा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा कामयाब होगा अपनी जिंदगी में, and you accepted that. That is a hypnotic suggestion. You didn't realize it. Okay, because for you it was अम्मी की दुआ थी, अम्मी का लाड था, अम्मी का प्यार था. But that was actually a hypnotic suggestion. इसी तरह अगर किसी ने कोई नेगेटिव चीज कही किसी को, और उस सुनने वाले ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, ये कुछ नहीं कर सकता, ये स्कूल में फेल हुआ, ये आगे भी कुछ नहीं कर सकेगा. If somebody accepted that is hypnosis. So when I'm working with people, a lot of time people come with these ideas that they have received from someone, and not realizing they've been hypnotized. A lot of times when people ask me, like, can you hypnotize me? The thing is this, most people don't realize they're already hypnotized. Okay. Most people actually need to be dehypnotized. Okay. So, जी रमजान. दो चीजें आपसे समझ करते हैं व्हाट इज हिप्नोसिस का. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन जो आपने बताया, टू एक्सेप्ट एनी सजेशन विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन. बहुत बड़ी एग्जांपल सर हमारा मीडिया है, हमारा टेलीविजन और एडवर्टीजमेंट है कि हमारा शैम्पू सबसे बेहतर है या हमारा
टूथपेस्ट और टूथब्रश सबसे बेहतर है, और हम ज्यादातर लोग वही चीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो हम एडवर्टीजमेंट से कन्विंस हो जाते हैं। और दूसरी जो चीज आपसे समझी वो ये है कि फिक्सेशन ऑफ अटेंशन। अगर आप किसी भी एक नुक्ते पर अपनी तवज्जो को मरकूज कर लेते हैं तो वो हिप्नोसिस है। एक छोटा सा वाक्य मुझे याद आ गया सर। कुछ अर्सा पहले हमारे घर में टेलीविजन पर एक ड्रामा चल रहा था, और मेरी अम्मी वो ड्रामा देख रही थी और मैं अपना कुछ काम कर रहा था। अचानक मेरी तवज्जो मेरी वालदा पे जाती है। मैंने देखा कि टेलीविजन के अंदर, उस ड्रामे के अंदर एक सीन आ रहा है जो कि स्लो मोशन में किचन में नमक की बोतल गिरते हुए दिखाया जा रहा है। और मेरी अम्मी इतनी इन्वॉल्व हो गई कि वो खड़ी होकर उस नमक की बोतल को होल्ड करने जा रही थी। तो मैंने कहा अम्मी आप हिप्नोटाइज हो गई हैं ड्रामे से। तो फिक्सेशन ऑफ अटेंशन और टू एक्सेप्ट एनी सजेशन, दैट इज कॉल्ड हिप्नोसिस। और भी बहुत सारी डेफिनेशंस है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे हिप्नोसिस की बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी। सो लेट्स टॉक अबाउट, आप आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि हमारे जहन को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, कॉन्शियस माइंड और दूसरा अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड। मैं आपके कॉन्शियस माइंड से बात कर रहा हूँगा, और मैं आपके अनकॉन्शियस माइंड से। कॉन्शियस माइंड की कुछ लिमिटेशंस हैं। जबकि अनकॉन्शियस माइंड आपका अनलिमिटेड है। मिसाल के तौर पर जो कॉन्शियस माइंड है वो 7 ± 2 इंफॉर्मेशन को ही गैदर कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितनी गाड़ियों के नाम जानते हैं, तो आप 7 ± 2 यानी कि 5 से लेकर 9 तक की गाड़ियों के नाम आप बता पाएंगे। या अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, तो कॉन्शियस माइंड के जरिए आप ज्यादा से ज्यादा 5 से लेकर 9 शैम्पू के नाम ही ले पाएंगे। जबकि Unconscious mind has everything, all the information, everything about you, about your past, everything that has happened in your life. हर वो चीज जो आपकी जिंदगी में हुई है, even things that happened before you were born. मैंने over years I worked with people जिनको जब sometimes hypnosis में we take people into their past and work with those things when needed. I've worked with people where they have been able to recall events when there was no consciousness, when there was no awareness. So unconscious mind is everything right now. So your conscious mind is just listening to few things, while your unconscious mind is listening to everything. Things not just that Ramzan is saying and I am saying, but all the other sounds in your environment. So for example, अगर आप अपने मोबाइल पे कोई इफ यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग अ मैसेज, आपका जो मोबाइल है इट विल नॉट रिकॉर्ड ओनली व्हाट यू आर सेइंग, बट आपके एनवायरनमेंट में जितनी आवाजें होंगी एवरीथिंग एल्स विल बी रिकॉर्डेड एज वेल. योर अनकॉन्शियस माइंड हैज रिकॉर्ड्स ऑफ एवरी सिंगल इवेंट इन योर लाइफ. लॉजिकली, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे हाथ में एक फ्लावर है, गुलाब का फूल है, तो आपका लॉजिकल माइंड उसके बीच में आएगा, कहेगा नो दिस इज नॉट फ्लावर, दिस इज द मोबाइल। तो कॉन्शियस माइंड थिंक्स लॉजिकली। हमारा और आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है इट्स इमेजिनेटिव, इट्स क्रिएटिव. ओके, सो इट्स लाइक जब आप ख्वाब देखते हैं, यू डोंट एनालाइज दिस. आप ख्वाब में अगर अपने आप को उड़ता हुआ देखते हैं, यू डोंट क्वेश्चन कि मैं तो नहीं उड़ सकता. अगर आप ख्वाब में किसी को देखते हैं जिसको दुनिया से गुजरे हुए बहुत अरसा हो गया, इट फील्स लाइक एज इफ इट इज रियली हैपनिंग, because at that time, in that moment, your conscious mind is not operating, only your unconscious mind is operating. Similarly, जब आप टीवी पे कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, जब आप कोई प्रोग्राम देख रहे होते हैं, जैसे रमजान ने जिक्र किया कि उनकी वालदा अचानक, सो दैट वाज एन अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स. सो जब आप कोई प्रोग्राम देख रहे होते हैं और आप उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको ये ख्याल नहीं होता कि जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं इट्स ओनली अ ड्रामा played by actors, it has a lot of VFX effects, and you are just responding to it. You are just feeling emotional about it. आप में से कितने ऐसे लोग हैं, by the way, जब आप कोई मूवी देखते हैं और उसमें कोई इमोशनल सीन आता है, you start crying? Type 1 if you do that, and it's perfectly okay, because that's how humans are. Okay, and you never realize that you've been hypnotized by that. You were hypnotized by that drama, by that movie.
आपने देखा होगा पिछले कुछ अर्सा पहले जब पाकिस्तान में अर्तरल बड़ा मशहूर था, तो लोग कितने इमोशनल हुए थे और लोगों ने उनके एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, मैं सर आई यूज्ड टू व्हेन आई वाज टीचिंग प्रैक्टिशनर कोर्स इस जमाने में, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता था अगर उसमें वो जो विलन बने हैं, जो अगर वो पाकिस्तान आ जाए तो हमारे भाई इतने अभी जज्बाती हैं, वो उन्हीं के साथ जिहाद करके उन्हीं एक्टर्स को शहीद कर देंगे। They were so involved in that. They were hypnotized by that drama. Okay. And in that very same way, a lot of times we are hypnotized by the drama we are running in our own heads. We don't realize this. Just because something happened in my past, we don't forget to realize it is over. अब जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जो ड्रामा जो मेरे दिमाग में चल रहा है, it's my mind, my creative mind, my imagination playing with me. Hypnosis is a very powerful way of actually reorganizing the drama in your mind, change it in your mind, and get rid of things that may be bothering you. जब मैंने आपसे 2017 में जब फर्स्ट टाइम मैंने हिप्नोसिस सीखा और जब आप ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का डिस्टिंक्शन बता रहे थे, तो वो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने सीखी वो ये कि कॉन्शियस माइंड ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है क्यों, व्हाई। कॉन्शियस माइंड मोस्ट ऑफ द टाइम आस्क व्हाई। और जब आपसे इस ट्रेनिंग के बाद मैंने अपनी पास्ट लाइफ को जब एनालाइज किया, तो मुझे पता चला कि मैं अपने आप से ज्यादातर यही सवाल पूछता हूँ कि मैं नाकाम क्यों हूँ, मैं आए दिन बीमार क्यों रहता हूँ, मेरे रिलेशनशिप्स क्यों खराब है, मैं जिंदगी में क्यों बैकवर्ड और डाउनवर्ड जा रहा हूँ। सो कॉन्शियस माइंड का एक फंक्शन ये है कि इट आस्क व्हाई क्वेश्चंस मोस्टली। And on the other hand, your unconscious mind has all the answers you need. Every answer that you need is right there in your unconscious mind. It's just that you are not paying attention to it. You see, deep inside, there is a wisdom, I like to say it like this, कि सोचो जब मैं और आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो हम उनको स्कूल भेजने से पहले चंद घंटे के लिए हम अपने आप से उनको दूर कर रहे होते हैं। We want to make sure कि हम बच्चे को हर चीज जो उसको जरूरत हो सकती है, उसको किताबें भी देते हैं, पानी की बोतल भी देते हैं, उसको स्कूल के लिए लंच बॉक्स भी देते हैं, उसके साथ उसको कुछ पैसे भी दे देते हैं, जस्ट इन केस अगर बच्चे को जरूरत पड़ जाए। चंद घंटे के लिए बच्चा हमसे दूर होता है। तो वो जिसने हमें यहाँ भेजा 50, 60, 70 साल जितनी भी हमारी जिंदगियां हैं, तो उसने हमें ऐसे ही भेज दिया होगा। वो जो हमारी माँ से ज्यादा 70 गुना, अल्लाह ताला के लिए कहना बहुत एक छोटी चीज है, बट बहुत बहुत ज्यादा हमसे मोहब्बत करने वाला, उसने जब हमें यहाँ भेजा तो ऐसे भेज दिया होगा। वो तमाम चीजें मेरे और आपके अंदर मौजूद हैं। हमारी अगर उस तक रसाई नहीं है, यानी आपको जब बच्चे को आपने किताब में लाइक लंच बॉक्स दिया था माँ ने, अब जब बच्चा स्कूल गया, उसने खेल कूदने में, भाग दौड़ में, वो जो लंच बॉक्स था किताबों के नीचे हो गया। अब बच्चे ने ब्रेक के टाइम पे जब खोला, एंड दिस इज, आज अम्मा ने मुझे लंच नहीं दिया, और बच्चा भूखा रह गया। जब घर आता है अम्मा से शिकायत करता है, अम्मा मुझे आज खाना नहीं दिया था, अम्मी आज लंच बॉक्स नहीं था। अम्मा कहती बेटा बैग में था, तुमने देखा नहीं, किताबें उठा के देखते, और उसके अंदर वहीं पर मौजूद था। अल्लाह ताला ने सब कुछ हमारे अंदर रखा है, हमारे, मेरे और आपके अंदर वो चीज जिसकी मुझे और आपको जरूरत है। जब हम इस जिंदगी के इस जंजाल में फंस जाते हैं, और when we get hypnotized by wrong things in our life, we forget कि हमारे अंदर बहुत कुछ है, और हम उसको एक्सेस करना छोड़ देते हैं, और फिर हमें लगता है हम फंस गए, हमारी जिंदगी में मुसीबतें आ गई। Okay, hypnosis is a method which helps you get access to that inner wisdom that is already in you. It's not, it's like, so when we say power of hypnosis, there is no power in hypnosis. The power is in you. Hypnosis is a method that you can use to get access to that power that's already in you. तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के तो जाहिर अभी हमारे पास बहुत ही कम वक्त था, जिसकी वजह से जितना डिस्टिंक्शन तो हम आपके सामने पेश कर सके। मगर जब आप लॉन्ग ट्रेनिंग पर आएंगे, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ट्रेनिंग के अंदर आप आएंगे और कामरान सर के साथ जुड़ेंगे, तो वहां अनकॉन्शियस माइंड के तकरीबन 20 के करीब 20 के करीब डिस्टिंक्शन आप मालूम कर सकेंगे। और
अनकॉन्शियस माइंड की बदौलत ही मैंने जो कामरान सर से ये सारी चीजें सीखी, तो उस वक्त मुझे पता चला कि कॉन्शियस माइंड लिमिटेड होता है जबकि अनकॉन्शियस माइंड अनलिमिटेड होता है। इनफैक्ट इस दुनिया के अंदर जितने लोगों ने, जितने साइंटिस्ट हैं, जितने मौजिद हैं, जितने इन्वेंटर हैं, उन्होंने जिन जिन चीजों को इजाद किया, चाहे वो एडिसन हो, चाहे वो ग्रैहम बेल हो, चाहे वो न्यूटन हो, उन तमाम ने अपना वो इमेजिनेटिव माइंड, अपने अनकॉन्शियस माइंड के उन पावर्स को इस्तेमाल किया है, उसको अमल में लाकर इतनी बड़ी उन्होंने क्रिएशन कर दी। मिसाल के तौर पे अगर इंसान आज से 100 साल पहले कहता कि वो चांद पर जाना चाहता है और उसको विजुअलाइज कर रहा है कि वो चांद पर जा रहा है, तो आई एम श्योर कि सब कोई भी उसको मानता नहीं। अगर राइट ब्रदर्स ने आज से 100 बरस पहले ये कहा कि वो एक ऐसा व्हीकल इन्वेंट करना चाहते हैं जो कि इंसानों को लेकर हवा में उड़ सके, ये उनका इमेजिनेटिव माइंड था, ये उनका क्रिएटिव माइंड था। लेकिन उसके अलावा जितने लोग कॉन्शियसली अवेयर थे, जो लोग अपने कॉन्शियस माइंड पर ज्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, उनको लगा कि ये सब ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, सब बकवास कर रहे हैं, ऐसे कैसे मुमकिन है कि कोई कोई शय, कोई ऐसा व्हीकल बहुत सारे इंसानों को लेकर हवा में उड़ जाए, या ये कैसे मुमकिन है कि इंसान चांद पर जाकर कदम रखे। तो इन तमाम ट्रेनिंग्स के बाद जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता हिप्नोसिस सीखा, बहुत सारे टूल्स हैं अपने अनकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के, मगर हिप्नोसिस मैं समझता हूं, मेरी जाती राय के अंदर एक आसान तरीन मेथड है, एक आसान तरीन टूल है अपने थॉट्स को कंट्रोल करने का, अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने का, और कामयाबी की जानिब बढ़ने का, तंदुरुस्ती की जानिब बढ़ने का, और आगे बढ़ने का। तो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कामरान सर ने कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड को। सो अब आप ये जानना चाहते होंगे कि हिप्नोसिस की जब इतनी जबरदस्त यूटिलाइजेशन है, इतने सारे लोगों ने जिन्होंने हिप्नोसिस को सीखा है, वो क्या हासिल कर पा रहे हैं। बहुत सारे और भी टूल्स हो सकते हैं, मगर हिप्नोसिस को हम आज आपके सामने लेकर क्यों आए, इसका फायदा क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है। तो मैं दूसरों की क्यों बात करूं, आज मैं आपको अपनी ही बात करता हूं कि हिप्नोसिस के बेनिफिट्स मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कैसे हासिल किए। 5 बरस पहले मेरी जिंदगी एकदम डिजास्ट्रस थी। मेरी हेल्थ, मुझे आए दिन नजला होता रहता था, मुझे साल में तकरीबन 4 मरतबा साइनस के अटैक्स होते रहते थे, मैं आए दिन अपने बच्चों पर शोर मचाता रहता था, और यहाँ तक कि मेरा एंगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। और मेरे बच्चे जब उस वक्त बहुत छोटे थे, उस वक्त मैं उनको मारा करता था, उनको चमाटे लगाया करता था, उनको बुरा भला कहा करता था। मेरे वालिदैन जो कि बुजुर्ग हुआ करते थे, मैं उनके सामने बहुत ही उनकी बेहुरमती किया करता था, अपनी वाइफ की बड़ी बेहुरमती किया करता था। मगर जैसे जैसे मैंने इन तमाम नॉलेज को हासिल करना शुरू, कामरान सर ने जब मुझे हिप्नोसिस सिखाया तो वो इतना इन डेप्थ था कि मुझे उसको प्रैक्टिस करने में मैं इतना लुत्फ अंदोज होने लगा कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मुझे उसके असरात नजर आने लगे। आहिस्ता आहिस्ता में कूल डाउन होने लगा, मेरा एंगर कंट्रोल होने लगा, मेरी हेल्थ बेहतर होने लग गई। अल्हम्दुलिल्लाह 5 बरस हो चुके हैं, मुझे साइनस का कोई भी अटैक नहीं हुआ, मैं डस्ट में भी बहुत आसानी से चला जाता हूँ अपने आप को प्रोटेक्ट करता हुआ। और मैं जो चाहूं, पहले मैं ठंडा पानी नहीं पी पाता था, यहाँ तक कि ऑरेंजेस में खा नहीं पाता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो कुछ नॉलेज सर से हासिल की उसको अपनी जात पर सबसे पहले अप्लाई किया, और जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया तो मेरी फैमिली मेंबर्स ने कहा कि आप बदल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने कहा, बाबा आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ रहा है। मेरी वाइफ और मेरे पेरेंट्स, जब मैंने बहुत ही मोहब्बत और एहतराम के साथ उनके साथ पेश आने लगा, तो उनको लगा कि जैसे अल्लाह की कोई रहमत आ गई है। तो मैंने उनको सबको यही बताया कि जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी नॉलेज है, ऐसी स्टडीज है कि अगर इंसान उन नॉलेज को हासिल कर ले तो वो अपनी जिंदगी पर, अपने जज्बात पर, अपने ख्यालात पर बेहतरीन तरीके से काबू पा सकता है। तो सबसे पहले मैंने अपने एंगर को कंट्रोल किया। एक और इशू ये था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत अरसे से सो नहीं पा रहा था, और जिस घर में अभी हम रह रहे हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे है, और मेरे घर के बिल्कुल नीचे पार्किंग है।
जहां पर आए दिन मोटरसाइकिलों की आवाजें, गाड़ियों की आवाजें, गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें मुझे बहुत ही तकलीफदेह मालूम होती थी। मगर जब मैंने हिप्नोसिस सीखा, कामरान सर से जब अपना ये इशू डिस्कस किया, तो कामरान सर ने मुझे कुछ सजेशंस बताए जो कि मैं हिप्नोसिस के अंदर इस्तेमाल करता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये आलम है कि बाहर कोई भी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल की आवाजें हो, वो सब के सब पावरलेस हो गए हैं। मैं जब भी सोना चाहता हूँ पुरसुकून अंदाज में सोता हूँ। मैं जब भी जागना चाहता हूँ अपनी मर्जी से बहुत ही खुशी के साथ जाग सकता हूँ। ना सिर्फ इतना दोस्तों, हिप्नोसिस के जरिए मैंने अपने बच्चों की भी हेल्प की। मेरे बच्चे ज़ाहिर है मुझसे बड़ा डरते थे। मैंने बताया कि मेरा माजी बड़ा खराब गुजरा, वो बहुत डरा करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं उनके साथ बैठ के उनको पढ़ाना मैंने शुरू किया। और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के ग्रेड्स बहुत ही लोअर आ रहे हैं, बहुत ही कम ग्रेड आ रहे हैं। तो मैंने कामरान सर ने, जब मैंने हिप्नोसिस सीखा तो सर ने ये मैनुअल दिया। ये पूरा मैनुअल है और इसके अंदर तकरीबन 25-30 के करीब स्क्रिप्ट कि किस तरह से अपनी मेमोरी को इंप्रूव किया जा सकता है, किस तरह से अपने कंसंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, किस तरह सेल्फ कॉन्फिडेंस को हासिल किया जा सकता है। और खास तौर पर आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा, अपने बच्चों के साथ भी एक्सपीरियंस किया होगा कि बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, मगर जब एग्जाम का बारी आती है, एग्जाम का दिन आता है, तो वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, कम ग्रेड्स आते हैं या खुदा ना खास्ता फेल हो जाते हैं। तो इस मैनुअल के अंदर एग्जाम रिमूव करने की पूरी एक स्क्रिप्ट मौजूद है। मैंने एग्जाम से पहले अपने बच्चों के साथ बैठ के 7 दिनों तक मल्टीपल टाइम्स उस स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू किया और अपने बच्चों को हिप्नोटाइज करना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमतों के तुफैल ग्रेजुअली मेरे बच्चों को पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट पैदा होने लग गया। उनका कंसंट्रेशन स्कूल के अंदर, पढ़ाई के अंदर और घर के अंदर बेहतर होने लग गया। और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मेरी बेटी ने हासिल की। मेरी बेटी ने कैंगरू मैथ्स, जो कि एक इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट है, वहां पूरे सिंध में जहां 26,000 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, वहां मेरी बच्ची ने पूरे सिंध के अंदर 3rd पोजीशन हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। और स्कूल में उसने 1st पोजीशन हासिल की। हालांकि वो मैथ्स में अच्छी नहीं थी, मगर मेरी हेल्प से, इस हिप्नोसिस की बदौलत उसकी आहिस्ता आहिस्ता मेंटल कैपेसिटी को एनहांस करना मैंने शुरू कर दिया। और अभी इन चीजों को सिखाते सिखाते मुझे 3 बरस हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो खुद सेल्फ हिप्नोसिस करने में कामयाब। जब भी एग्जाम्स आने वाले होते हैं उससे पहले वो अपने आप को एग्जाम्स का विजुअलाइजेशन करते हुए, सेल्फ हिप्नोसिस करते हुए, सुकून कैफियत के अंदर बड़ा इंजॉय करते हुए वो अपने एग्जाम्स दे रहे हैं। इसी तरह जब मैंने, जिस तरह मैंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 400 लोगों के साथ काम करने का मौका मिला 1-to-1 बेसिस पर या ग्रुप में। एक स्टूडेंट मेरे पास आई जो कि कराची के एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी के अंदर मैनेजर थी। उन्हें मजीद अपनी प्रमोशन के लिए एक एग्जाम पास करना था और वो एग्जाम की जो कॉस्ट थी बहुत ही हाई थी, 1.5 लाख या 2 लाख रुपए उसकी कॉस्ट थी। उसने मुझसे राब्ता किया कि सर मैं अपने डिपार्टमेंट की एक बेस्ट बेस्ट परफॉर्मर हूं, एक स्टार परफॉर्मर हूं, और मुझसे ये एग्जाम पास नहीं हो रहा। मैं 4 अटेम्प्ट्स दे चुकी हूं, मेरा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, और क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो मैंने उसके साथ 3 हिप्नोसिस के सेशन किए और अल्हम्दुलिल्लाह उसके एग्जाम से 2 महीने पहले मैंने उसको गाइड करना शुरू किया और उसको सेल्फ हिप्नोसिस टीच किया। और अल्लाह ताला की रहमतों के तुफैल वो पास हो गई और उसकी प्रमोशन हो गई, और आज वो पाकिस्तान से बाहर जाकर एक बेहतरीन जगहों पर अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। तो मेरा मकसद ये है दोस्तों कि ऐसी नॉलेज आज मौजूद है, ऐसी स्टडीज आज मौजूद है, ऐसी किताबें आज मौजूद हैं कि आपको अपनी जिंदगी जो 40 वर्षों से आप गुजार रहे हैं वैसे अगले 40 साल गुजारने की जरूरत नहीं है। आप अपनी वेल्थ को, अपनी हेल्थ को, अपने रिलेशनशिप्स को इन नॉलेज के जरिए, हिप्नोसिस के जरिए इंप्रूव कर सकते हैं। आई एम श्योर यहाँ पर और भी पार्टिसिपेंट्स होंगे। यहाँ पर मुझे इरम नजर आ रही है। इरम, आपने भी हिप्नोसिस सीखा हुआ है गालिबन, तो मुझे बताइए हिप्नोसिस ने आपकी जिंदगी के अंदर क्या तब्दीली? जी इरम।
Assalamu alaikum, sir. Can you hear me? Walaikum assalam. Walaikum assalam. Ji, thank you, Ramzan. And it's been a year. I got, I think, 2 years. Last February 2021, mein, I got connected to Sir Kamran, and the first course which I did from him was hypnosis trainer and practitioner and trainer. इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, लेकिन हिप्नोसिस की इस वक्त बात हो रही है इन पर्टिकुलर, तो मेरे लिए जो हिप्नोसिस ने रोल प्ले किया है, दैट नाउ व्हेन आई डू क्लाइंट्स, I use it many times with them, and I have seen drastic results. In one session also, or when 20 minutes की आप short hypnotic induction कराएं, and you can see drastic results. अक्सर मैंने training में group में भी लोगों को hypnosis की exercises करवाई हैं. और अगर अपनी बात की जाए, so I have also used exercises of hypnosis for my own self also. कभी-कभी कोई सेशन करने से पहले if you feel low of energy, you need to relax, you need to enhance your confidence. A short exercise may be very helpful. इसी तरह से और बहुत सारी चीजों के लिए जैसे आप बताते रहे अभी. So it is definitely inside us, लेकिन इसको कैसे करना है, एक formal training और एक formal तरीक़ेकार सीखना जरूरी है. Everybody can do it. So when I initially joined the course, तो मुझे लगता था कि मैं ये नहीं कर सकती. I'm not the right subject. शुरू में प्रॉब्लम भी थोड़ी सी हुई, बट देन सर कामरान रियली हेल्प्ड एंड ही प्रूव्ड के एवरीबॉडी कैन डू इट, व्हाई कांट मी. और इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, रिपीटिशन इज अ मस्ट. सो ऑफ कोर्स उसके बाद फिर आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो पर्सनली भी हेल्पफुल है और प्रोफेशनली. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. Thank you, Iram. कामरान से मैं जानना चाहूंगा कि सर मैं तो 5 साल से सीख रहा हूँ, इरम ने 1 साल से सीखा, इतनी पॉजिटिव चेंजेस हैं. आप तकरीबन 30-35 वर्षों से सीख रहे हैं और 25 सालों से सिखा रहे हैं. क्या आप अभी भी हिप्नोसिस कर रहे हैं और आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली है? Okay, Ramzan, thank you very much. It's like you've given a lot of information. Honestly speaking, मैं इतने अरसे से hypnosis कर रहा हूँ, I don't even think about doing it. Okay, it's like आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं, आप बार-बार आप गाड़ी चलाते रहते हैं, then एक टाइम आता है, you're not thinking अब मैं पहला गियर लगाऊंगा तो मैं दूसरा गियर लगाऊंगी. You just do it. You know, it becomes part of you. So for me, like, I don't think about doing hypnosis. I don't think about, like, if I'm working with people, I don't think about doing a hypnotic induction, a formal hypnotic induction, because बहुत साल पहले I learned this. एक hypnosis, एक अच्छे hypnotist की skill ये है that you walk into a room and you just open up your mouth and people start experiencing a hypnotic trance. And for me, this is just part of my life. So I use it for everything. Now, formally, I practice it almost every day. Okay. सुबह में मेरा एक रूटीन है, मैं नमाज के बाद generally होता ही है कि मैं I meditate for maybe 30 minutes, 25 minutes, and that meditation is like I'm not doing kind of meditation. I'm doing some form of hypnosis with myself. Okay, because जैसे भी इरम ने कहा, हमारा जो unconscious mind है आपका, it needs repetition. जो आपका unconscious mind, it's a programmable mind. It can be reprogrammed. You're not stuck with whatever happened in your life. मेरी जिंदगी में there was a time, मैं जब छोटा था, I'm the only son in my family. मेरे माशाल्लाह 5 बहन हैं. So I used to be very shy. मेरे अंदर confidence was literally zero. मेरी किसी से बात करने में मेरा हलक खुश्क होता था, पसीने छूटते थे. I remember मैं IBA में था, मेरा first semester था, and मुझे एक presentation देनी थी, like 5 minutes की mandatory presentation. और उसके लिए जब बुलाया टीचर ने, मैं खड़ा हुआ, मेरा हलक खुश्क, शर्ट ठीक कर रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं. IBA में मैं इवनिंग कैंपस में था. Those of you who may know it, जो इवनिंग कैंपस उस जमाने में रूम नंबर 2 होता था, वो I still remember, it was my first semester. तो हमारी जो अक्टूबर का महीना था, एयर कंडीशन क्लासेस थी, अच्छी खासे रूम में ठंड थी और मेरे पसीने छूट रहे थे. Okay, and I was unable to speak for 5 minutes. I was 25 years old at that time because I was so afraid. Even though, by the way, उस वक्त I had been like doing some hypnosis with other people mostly, not with myself as much.
and I was like doing things because शुरू में क्या होता है, एक चीज होती है, हम सब ये गलती करते हैं कि जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हम ये सोचते हैं इससे दुनिया को तब्दील कर देंगे और दूसरों को इससे फायदा पहुंचाएंगे, and we forget the first person we should work is our own selves. Okay, this is where all change begins. So I was doing it for other people, okay, but didn't realize that I have these issues that I need to work with. So, but that experience, that presentation became my first point when I realized I need to work on myself, because, and that's when I started working on my, overcoming my fears, developing my presentation skills, improving my public speaking skills, so much so as a trainer, I designed a course called Charismatic Public Speaking Training. I taught that course for 21 years. Okay. And public speaking is my bread and butter. Just think about this. Okay. So this is because I used hypnosis on myself. I literally reprogrammed myself. Okay. So I changed the way that I used to operate, changed the way that I used to be. And alhamdulillah, Allah ka shukr, alhamdulillah, mere hazaron ke hisab se bhi students hain duniya mein, and I've taught, hypnosis, NLP, and many other courses to literally thousands of people all over the world. So benefits ki jahan tak baat hoti hai, dekhiye, it's think of it like it's a toolbox. Aapke ghar mein ek first aid बॉक्स होता है, आपने पैनाडोल रखी है, पैरासिटामोल रखी है, you just don't eat because आपके घर में पैनाडोल रखी है, you eat when you need it. So लेकिन it's like, why not stay healthy and do something to stay healthy so you don't even have to take those medicines. Okay, so hypnosis basically helps you in understanding yourself. It helps you understand other people, because एक चीज जो होती है, जो अगर मुझसे कोई पूछे मुझे इन सारी चीजों का क्या फायदा हुआ, मैं एक फायदा बता सकता हूँ, और वो फायदा ये है that alhamdulillah I can say I live with awareness. Okay, so when I'm communicating with people, when I'm teaching, if I'm using this hand, I know exactly when, why, and how I'm using this hand. Okay, I'm not doing it randomly. So if I'm using, when I'm speaking, the way that I'm utilizing my tonality, I know exactly when, how, and why I'm using that tone. If I'm speaking a sentence, or if I'm writing something, I know when, why, and how why I'm writing it. So, it's like, those are some of the personal benefits, and I'm not suggesting that everyone will get same things, but I know many people, मेरे बहुत से ऐसे students हैं, जैसे रमजान ने बताया, who had these things, उनके अपने बच्चों के साथ issues थे, they work with their children, help their children improve their memories. मैं अपने बच्चों के साथ, I don't do like that kind of formal hypnotic inductions with my children. I just talk to them. Okay, आपका जो mind है, as I said, it's all communication. Remember that. It's all communication. Yeah. When you are able to communicate with the unconscious mind, and when you understand how the unconscious mind works, and when you understand how to influence the unconscious mind, and then you just speak, and then you are able to make changes in other people through your communication. Hypnosis की दो branches हैं, दो बड़ी branches हैं. उनमें से एक branch जो है उसको traditional hypnosis कहते हैं. Maybe Ramzan would like to shed some light on that. Yeah, traditional hypnosis या हम इसको direct hypnosis कहते हैं. मिसाल के तौर पे direct hypnosis का मतलब direct suggestions देना. For example, close your eyes, go inside yourself, feel completely relaxed. ये direct hypnosis है. जबकि indirect hypnosis क्या है सर? So everything else, every communication that we make is indirect. Right. Okay, so if I'm speaking to you, I don't have to say मुझे पानी पिलाओ. Just as an example, it's like military में जो जंगें होती हैं उसमें दो किस्म की strategies होती हैं. एक होती है frontal attack और एक होती है outflanking.
So frontal attack is like giving direct suggestion. जैसे रमजान ने आपसे कहा. Okay, so for example, if you say आंखें बंद कर लो, that's a direct suggestion. But indirect suggestion could be, and there are thousands of ways of doing it. One simple way of doing it could be if I say, can you close your eyes? Now, if I say, can you close your eyes? Apparently, I'm asking you a question. But it is like if I ask you, can you tell me, अभी जो FIFA World Cup उसमें कौन जीता है? By the way, can you tell me that? This is like FIFA World Cup में कौन हुआ? And when I ask you that question, a lot of people, since it's like अगर हम, if you were in a communication, if I asked you, I ask these questions, these kind of questions in my classes a lot, and like I just point out to my students, what people do, they start telling me, oh, Argentina. So it's like, so if you think about this question, can you tell me? The answer to that question, yes, I can, or no, I cannot. Yeah. But people don't say yes, I can, or no, I cannot. What they do is they start responding. And they're giving you a hypnotic response. They're creating a response. They're speaking hypnotically. They don't realize that. So when I was just maybe recently अपनी बीवी से बात कर रहा था, like she's one of my biggest subjects. So मैं अपनी बीवी से बात कर रहा था, and I was just telling her, the way that I think that I've been doing things is, it's a visual in my mind. It's hard to explain in words, but if you look at a building, जो भी इमारत होती है, जो भी बिल्डिंग होती है, एक स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ी होती है. उसकी एक बेस होती है, और उसके अंदर फिर कुछ आपने देखा होगा पिलर्स होते हैं, एंड फिर बेस की छत पड़ी होती है, एंड उसके ऊपर फिर बिल्डिंग बनी होती है. हमारी जिंदगी की जो परसेप्चुअल वर्ल्ड हमारा एक बना हुआ है, उसकी कुछ बेस है. और वो जो बेस है, अगर फर्ज करो किसी बिल्डिंग की आप उसकी बेस हिला दें, अगर आप उसकी स्ट्रक्चरल उसके अंदर कोई तब्दीली कर दें, तो वो बिल्डिंग जो है वो खड़ी नहीं रह सकेगी. कभी कभी हमने जो अपने दिमाग में मुसीबतों की बिल्डिंग खड़ी कर रखी होती है, हमने फसादों की बिल्डिंग खड़ी कर रखी है, हमने लिमिटेशंस की बिल्डिंग खड़ी कर रखी है. मैं जी पैसे नहीं कमा सकता, कि मैं जी अच्छे रिश्ते नहीं कायम कर सकता, मुझसे ये नहीं हो सकता, और मुझसे वो नहीं हो सकता. ये हमने अपने जहन में बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस की हुई हैं. हिप्नोसिस के जरिए वो जो बेस है, उसको ना सिर्फ हिलाया जा सकता है, बल्कि यू कैन रिकंस्ट्रक्ट इट. समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई पुरानी मखदूश इमारत है और उसके अंदर रह रहे हैं, और उसको जो है गिरा देना बेहतर होता है, बिकॉज उसके अंदर रहने वाले जो है उनके लिए बड़ा खतरा है कि दे आर इन दैट बिल्डिंग, और अगर वो गिर गई तो बहुत सारी जिंदगियां उसकी वजह से तबाह होंगी. एंड वी डोंट रियलाइज कि कभी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस कर रखी होती हैं, और उसकी वजह से ना सिर्फ हमारी बल्कि हर वो शख्स जो हमसे लिंक करता है, हमारी अपनी फैमिली, हमारे बच्चे, हर शख्स जो हमसे लिंक एसोसिएटेड है, उसकी जिंदगियां मुतासर हो रही होती हैं. एंड वी डोंट रियलाइज दैट. सो हिप्नोसिस के जरिए वी कैन एक्चुअली रिकंस्ट्रक्ट दैट. इट्स मकसद ये नहीं है कि हमने कि इमारत गिरा देनी है. मकसद ये है कि वो जो इमारत, खतरनाक इमारत जिसमें हम रह रहे हैं, उसको गिरा के वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू वन, अ बेटर वन, अ वन जिसके अंदर वी कैन हैव अ बेटर लाइफ, द काइंड ऑफ लाइफ वी वांट टू लिव, नॉट अ लाइफ ऑफ फियर. मैं आई डू कोचिंग सेशंस, और मेरे ग्रुप कोचिंग सेशंस होते हैं मंडे को. तो मैं अक्सर जो लोग उसमें आने वाले होते हैं, मैं उनको एक चीज बार बार याद दिलाता हूँ. And I say that to a lot of people, and I tell them, grow up. I tell them, grow up, because a lot of times लोग बड़े हो जाते हैं. फिजिकल बड़ा होना तो इंसान के अख्तियार में नहीं होता, but mentally हम बच्चे रहते हैं. Okay, that mama's boy or mama's girl, और वो मामा's बॉय और मामा's गर्ल जो है, वो अपने लिए और दूसरों के लिए इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं. They don't realize it. I know a lot of men, married men, who just can't take responsibility of their wives. अल्लाह ताला ने मर्द को औरत का कव्वाम का है. यहाँ पे मर्द की हालत ये है कि उनको बेगम से इजाजत मिलेगी तो फिर कुछ करेंगे. Seriously? I mean, are you really a man?
बिल्कुल बिल्कुल. Is this how you live? And just imagine, what are you teaching your son? Creating another half man? And do you think that if you live like that, your wife will feel protected and will respect you for being a half man? Because physically तो वो बड़े हो गए, okay, but mentally वो अभी तक बच्चे ही हैं, can't make their own decisions. Half man, hypnosis, because they've been hypnotized into believing their limitations. Hypnosis helps you understand, break through those limitations. जैसे मैंने कहा, it's like अल्लाह ताला ने आपको अगर मर्द बनाया है तो वो मर्दानगी आपके अंदर रखी है अल्लाह ने, और अल्लाह ने अगर आपको औरत बनाया तो वो निस्वानियत अल्लाह ने आपके अंदर रखी है. And I've worked with women, by the way, who live like men just because they're working. I've heard from girls who are working, oh, I'm not a girl, I'm a boy. Why? Because you're earning? You're denying the rule जिस पे अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है. बिल्कुल दुरुस्त है. And sometimes people are not doing it consciously. They are doing it unconsciously. Okay, so I'm sorry, I have this habit of like going into tangents and start speaking about things, and it's like working with your unconscious. As I said, unconscious mind has everything, and I have this bad habit of working with your unconscious mind. Okay. सर में इतनी प्रैक्टिस की है कि वो अब इनके अनकॉन्शियस का पार्ट बन गया है, उनके वजूद का हिस्सा बन गया है, उनकी हैबिट का पार्ट बन गया है. तो बहुत अच्छी हैबिट है सर, बहुत कीमती बातें हैं आपने शेयर की, बहुत कीमती एक्सपीरियंस आपने जिंदगी के शेयर किए. हम सब तकरीबन पिछले 1 घंटे से हिप्नोसिस के बारे में हमने जाना, कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के बारे में जाना, हिप्नोसिस के बेनिफिट्स के बारे में जाना. एक चीज जो अक्सर लोगों को डिस्टर्ब कर रही है, उसे हमें क्लियर करने की जरूरत है, और वो हिप्नोसिस के बारे में कुछ मिसकंसेप्शन हैं. फॉर एग्जांपल सर, एक मिसकंसेप्शन बड़ा कॉमन है कि जब किसी से पूछते हैं कि आप हिप्नोसिस करेंगे या सीखेंगे, तो वो कहते हैं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि जब आप मुझे हिप्नोटाइज करके मेरे सारे सीक्रेट्स आप हासिल कर लेंगे, क्या ये तो नहीं हो सकता? तो आई एम श्योर सर, इस पर क्या कहेंगे सर कि हिप्नोसिस से लोगों के सीक्रेट आप चोरी कर लेंगे? Yeah, it's like Ramzan, the very first client, professionally, when I started working, the very first client, उस ज़माने में I used to do, house calls. मैं लोगों के घरों पे जाके sessions करता था. The very first person जिसके घर पे जाके मैंने session किया, तो I asked him this question, do you have any concerns of going in trance? And they said, yes, आप मुझे मेरे सारे secret पूछ लेंगे. And this is such a common misunderstanding. देखो, hypnosis की जो state होती है, it's a state of fixation of attention. आपका ज़हन जो एक चीज पे फोकस होता है, it's not a state of stupidity. Yeah. Okay, it's the state of यानी जैसे छोटा बच्चा होता है. बहुत साल पहले की बात है, मेरे माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए, लेकिन जब बहुत छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, तो मैंने अपने बेटे को एक लाइक गाड़ी दिलाई थी. हम लोग उस हमारे पाकिस्तान में, तो रिमोट कंट्रोल गाड़ी, उनको वो गाड़ी दीवार पे भी यूं सीधी चलती थी, वो बड़े एक्साइटेड थे. तो क्या हुआ कि मेरी जो बहनें आ रही थी उस दिन, तो सारी बहनें, उनके माशाल्लाह बच्चे, तो हमारे घर में माशाल्लाह 16 बच्चे हैं, तो मेरी बहनें, उनके बच्चे आए, तो मेरा बेटा जो था ना, उसने अपनी गाड़ी ले जाके कहीं छुपा ली. अब जब बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने उससे कहा कि बेटा कि अपनी गाड़ी लाओ, खेलो. इट्स लाइक उसके कजन के साथ. बाबा पता नहीं कहाँ रखी है. कहाँ है यार? वही हम. नहीं बाबा पता नहीं. एंड इट्स लाइक बाबा पता नहीं कहाँ रख दी गाड़ी, मिलने लिए पता नहीं कहाँ लग गई. ओके, बच्चे गए, वो गया जाके अलमारी से निकाल के, एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग, एंड ही वाज प्रोबेबली 3-3.5 साल का होगा. बट यू नो व्हाट, एक 3.5 साल का बच्चा अपना सीक्रेट नहीं बता रहा था कि उसने गाड़ी कहाँ रखी है. एंड हिप्नोसिस से 40 साल का आदमी डरता है, मेरे सीक्रेट पूछ लेंगे. आपका पासवर्ड फेसबुक का बेगम को बता देंगे. ऐसा कुछ नहीं होता. एक और मिसकंसेप्शन है कि आप किसी को हिप्नोटाइज करके उसका माइंड का कंट्रोल हासिल कर लेते हैं और जो चाहे उससे आप करवा सकते. The best thing actually, if it's like hypnosis के जरिए, you get control of your own mind. Yes,
That's what I did. Because आपके माइंड का कंट्रोल तो ऑलरेडी सियासतदानों ने लिया हुआ है. आपका माइंड का कंट्रोल तो ऑलरेडी टीवी के ड्रामों ने लिया हुआ है. Very true, very true. जब आप जज्बाती होते हैं ना सियासी नारों को देख सुन के, जब आप जज्बाती होते हैं वीडियो क्लिप्स को देखकर, you are losing your control in those, giving your control to those hands. Hypnosis actually gives you control. So anyways, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी पावर्स हैं हिप्नोसिस के, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. अब मेरा आपसे ये सवाल है, क्योंकि हम इस वक्त एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप में से कितने लोग मजीद हिप्नोसिस के बारे में, अपने अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में मजीद जानना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में अपना कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मजीद हिप्नोसिस के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है यस, तो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स. ओके, उस्मान सेज यस, Saira, yes. Iqbal, yes. Zahu, yes. So now my second question is, I know you all are very interested. So my second question is, how many of you are really committed and willing? बहुत से लोग सिर्फ interested होते हैं और बस वो interest आता है और वो खत्म हो जाता है, मगर कुछ लोग interested होने के साथ साथ committed भी होते हैं. So how many of you are committed to learn hypnosis in very depth and apply on yourself and improve your own thoughts and improve your own life and help other people grow them up? So if the answer is yes, type 2. If you are committed to learn more about hypnosis in depth from one of the renowned trainer in the world, that is Kamran Sultan, so please type 2. Zaida say yes, Fatma 2, Amirali yes, Atif 2. Okay. एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करूं, बाय द वे, रमजान ने जो बात की, जिंदगी में एक चीज, हम अक्सर चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं. यस. हम कमिटेड नहीं होते हैं. मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि मैं अपने आप को फिजिकली फिट रखूं. आई एम नॉट कमिटेड टू डू दिस. सो मैं इंटरेस्ट की वजह से मेरे अंदर मोटिवेशन, और मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है. नहीं, मेरे अंदर मोटिवेशन. इरम, अगर आप काइंडली ऑनलाइन आकर देखें कि जिन लोगों ने जूम पर क्वेश्चंस किए हुए हैं या यूट्यूब के अंदर क्वेश्चंस किए हुए हैं, अगर आप कामरान सर तक पहुंचा दें तो बहुत आसानी होगी हमारे ऑडियंस के लिए. तो इरम, आप मौजूद हैं प्लीज? जी रमजान, मैं मौजूद हूँ. और जितनी देर सेशन हो रहा था, कुछ क्वेश्चंस जो मुझे रेलेवेंट लगे हैं वो मैंने नोट किए हैं. सर, द फर्स्ट क्वेश्चन आई फाउंड रेलेवेंट वाज फ्रॉम जाहिद, and he wanted to know, can direct hypnosis be done online? Absolutely. It's like मैंने जो online sessions हैं, I think 2015 में I started doing online hypnosis sessions. और उस ज़माने में तो Zoom भी नहीं था हमारे पास, तो Skype के ऊपर हम करते थे. And absolutely it can be done, most certainly. Why not? All you need is a good good internet connection. Okay. So what's next? So Iram, you are muted. Ji Iram, you can unmute yourself. Yes, sir, वो हो नहीं रहा था. जी, another question that I found relevant was from Shuja Ahmed. Can I use hypnosis to cure my own dilemma or fixed mindset? I don't know what you mean by dilemma, but it's like if you talk about hypnosis, the answer is yes. But दो चीजें होती हैं. देखिए, एक सवाल है, क्या मेडिसिन में मेरा इलाज है? तो जवाब है हाँ, ठीक है. मगर क्या ये दूसरा सवाल है, क्या ये स्पेसिफिक डॉक्टर मेरे काम आ सकता है? That may or may not be yes, that may be yes, maybe no, because situation to situation her doctor की expertise different होती है. So I don't work with psychological issues. I'm not a psychologist. I don't deal with any psychological issues, and none of my students do either. Okay, unless they are already trained psychologists and psychiatrists. But मेरे courses में I don't teach that. I don't work with that. So अगर आपका कोई psychological issue है, so no.
I don't work with that. I'm not the qualified person. I'm not the right person for that. Okay. लेकिन अगर आपका खाली सवाल ये कि क्या इसका इलाज हो सकता है, the answer is yes. Okay, most certainly. Sir, another question is from Faiza Sumbul. Can I cure anyone in my family members? You can't cure anyone anywhere. Allah cures whom He wills. You can help. Okay, it's like देखो जो बेहतरीन डॉक्टर होता है ना वो दवा दे सकता है, शिफा अल्लाह देता है. So when you learn these tools, you know, if there are people who want to be helped, Faiza, आपने मेरा पहले I think boot camp attend किया है, and जो basic condition होती है किसी भी चीज में, you know, when it comes to change, that's their own willingness. If they're not willing to be helped, then you can't. But if they are willing to be helped, but they are unable to, you know, work, you will be able to help them definitely. Okay. Yes, sir. Sir, another question was by Muhammad Ammar. I want to use this technique in digital marketing. So is it possible? Is it going to be helpful? Yeah, digital marketing or any marketing, if you know, indirect hypnosis can be used anywhere. Digital marketing, ये जो हमारा boot camp है, इसमें you will be learning most of the things that you will be learning are about traditional direct hypnosis, and there will be some flavor of indirect hypnosis. You know, it's like some skills you will be learning, but mainly it's about traditional hypnosis, because this is an introduction. So if you want to learn more like indirect वाली चीजें, बहुत सारे ऐसे लोग जो hypnosis को personally or professionally practice करना चाहते हैं, you know, but they are unable to decide कि यार should I go for this, ये मेरे like इतने पैसे मैं इसमें invest करूं, वक्त लगाऊं या ना लगाऊं. So you will have an experience and a clear understanding whether this is the right thing for you or not. So by the end of this program you will have a clear answer. लेकिन specific अगर आप बात करें digital marketing में आप use करना चाहते हैं, इसमें जो चीजें होंगी, not everything will be of relevance to you in digital marketing. There will be some things that you will be able to use, but there's a lot more that you can use अगर आप जो complete hypnosis का ये NLP home study course है मेरा, if you learn that, so उसमें जो indirect hypnosis की language patterns है, that you can definitely use. Yes, sir. So another question is from Shah Jahan Mengal. Can depression be cured through hypnosis? The answer is yes, similar. But I'm not the person who works with these things. Okay, so सवाल ये कि डिप्रेशन का इलाज हो सकता है हिप्नोसिस के जरिए, जवाब है जी बिल्कुल हो सकता है. दूसरा अगर सवाल है कि क्या कामरान सुल्तान करते हैं या करेंगे, so I'm not the right person. देखो ये इस तरह समझो, आंखों का डॉक्टर भी डॉक्टर होता है, हड्डियों का डॉक्टर भी डॉक्टर होता है, दिल का डॉक्टर भी डॉक्टर होता है. तो आप आंखों के डॉक्टर को दिल दिखाने नहीं जाते हैं, डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है इसको दिल दिखाने के लिए, लेकिन इट्स लाइक हड्डियों के डॉक्टर को आप आंखें नहीं दिखाते और आंखों के डॉक्टर को दिल नहीं दिखाते. सो इट्स लाइक सबकी स्पेशलिटी डिफरेंट होती है. मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, आई वर्क विद परफॉर्मेंस एनहांसमेंट. आई कैन हेल्प यू improve any skill you want, and that's what I teach. I can help you change habits. I can help you develop a skill that you don't have. I can help you develop a skill which you have and you want to improve it and make it even better. So you want to become a better communicator, you want to be more confident, you want to be more creative, you want to be more energetic, you want to be more charismatic, you want to have, improve your income, you want to overcome your shyness, you want to develop more assertiveness, you want to be more manly, things which you want to improve. I can help you with that. Lekin if a person has any kind of psychological issues, clinical depression, schizophrenia, bipolar disorder, or OCD, I don't work with those things. So अगर आप में से किसी का भी, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है किसी का भी कि क्या इस चीज का इलाज हो सकता है, आंसर इज yes, हो सकता है, but I am not the right person. I don't do that. Ramzan doesn't do that. Iram doesn't do that. And inshallah ta'ala, मैं और Iram we'll be doing a program inshallah shortly. But like, we don't work with these things. Okay? So, जी Iram, what's the next? जी sir, next question is from Dr. Zainab. जिसने NLP home study course किया हो, उसको भी लेना चाहिए hypnosis boot camp? डॉक्टर साहब,
आपने एमबीबीएस करने के बाद कभी कोई वर्कशॉप अटेंड किया है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, या आपने एमबीबीएस के बाद बस छोड़ दिया, वो हो गया, कंप्लीट हो गया, जरूरत नहीं है? अगर आपने किया है तो फिर आप कर सकते हैं, और अगर आपने एमबीबीएस करने के बाद आपको ये लगा कि बस मजीद अब मजीद जरूरत नहीं है, तो फिर आपको इसकी भी जरूरत नहीं है। आई होप यू गॉट योर आंसर। So next is from Aruj on the YouTube. Sir, anchoring भी hypnosis की type है? एंकरिंग एनएलपी की एक टेक्निक है जो उसमें हिप्नोसिस में एंकरिंग यूज होती है। ओके, एंकरिंग इज यूज्ड एवरीवेयर, एवरीथिंग इज एन एंकर। ओके, योर नेम इज एन एंकर। सो एंकरिंग हिप्नोसिस में भी यूज होता है। इट्स अ टूल, इट्स अ टूल। ओके, एक बेसिक सी मिसाल देता हूँ, नमक। ओके, आप ये बोलें कि अच्छा क्या बिरयानी बनाने में नमक पड़ता है? जी पड़ता है। अच्छा, तो अगर मैं चाट बनाऊं उसमें भी नमक पड़ेगा? जी पड़ेगा। ओके, सो एनएलपी में एंकरिंग, यू लर्न एंकरिंग मोर फॉर्मली इन एनएलपी, बट इफ द क्वेश्चन इज क्या हिप्नोसिस में यूज होता है, द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एंकर्स, देयर आर लिटरली hundreds and hundreds of different forms of doing it. Okay. So another question, Mohammed Hassan Sami. He's on YouTube. Can hypnosis help in controlling overthinking Most of certainly. mind? Yes, absolutely. These were the most relevant. And one person also asked, sensitive लोग कर सकते हैं hypnosis का boot camp? क्यों नहीं कर सकते? Why not? Okay. एक और एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, because of this question ये चीजें में आई है। I see that a lot, and this is for everyone, you know, whether you're watching it live or Zoom पे या कहीं पे भी आप देख रहे हैं। Stop labeling yourself. जिस वक्त आप जैसे होता है जी, मेरा सितारा फलाना है, इट्स लाइक मैं जी मरीख में पैदा हुआ, ओके, मेरा वर्गो स्टार है और मेरा लियो है और मेरा ये, तो मेरी ये खवास है। As long as you buy that, that's hypnosis by the way. If you accept that, okay, इस सितारे में पैदा होने वाले लोगों की ये खवास होते हैं, ये चीज पुराने जमाने में होती थी जो आज तक चल रही है। एक हमारे दौर में एक नई चीज, ओके, पर्सनालिटी टाइप्स बना लिए। आई एम CFBG। ओके, कभी कभी लगता है कि वो कोई इंडियन बीजेपी पार्टी के लोग हैं, आई एम BJP। ओके, यू आर नन ऑफ दैट। Okay, those are labels you are buying into. You are everything. You can be anything you want. But the moment you buy that, the moment you accept those theories, you have put a limitation on yourself, on your potential, on what you are capable of, on what you are able to do. As long as you are buying into that, and then you have those kind of OG किताब में OG research से कभी आप पढ़िएगा इनकी जो जिन चीजों के पीछे इनकी असली आई कहाँ से है। ओके, क्या होता है वो जी, वो बताने वाले जी आपको पर्सनालिटी टाइपिंग सिखा रहे हैं जी, मेयर ब्रिक्स, चाहिए जरा थोड़ा सा पढ़िएगा इनके बारे में, ये आए कहाँ से थे, ओरिजिन्स इनके कहाँ से हुए थे, देन यू विल फाइंड। ओके, डोंट बाय इनटू दैट। ओके, आई एम एन इंट्रोवर्ट, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, समटाइम्स यू आर एन इंट्रोवर्ट, समटाइम्स यू आर एन एक्सट्रोवर्ट। You're not introvert or extrovert. You're a human being who sometimes acts with introvert tendencies, and sometimes you act with extrovert. Okay, so I am a righty, I use my right hand, does it mean I don't use my left? No, I use my right for certain things and left for others. Oh, he's a lefty, does it mean he doesn't use his right? No, he uses both. One is more dominating. Okay, please stop personality typing yourself. As long as you're buying into no limitation will determine whatever you do. Sir, Hina Suhail wants to ask, are there any prerequisites to learn hypnosis? This program, Hina, jo boot camp hai, this is the most basic level. The most basic level. So if there's any prerequisite, this can become a prerequisite, because मेरे programs में बताने में there are certain prerequisites. Commitment, okay, an open mind, non-serious attitude. Okay, I don't take, it's like many classes mein people are laughing. Okay, they have fun, lot of fun. Okay, I don't take seriously. Okay, now hypnosis ki class shuru ho rahi hai, let's study. Okay, I'm sorry, I can't do that.
Okay, so have an open mind, be committed to learn. And even if you're taking any of my home study courses, that commitment will help, because without commitment, nothing happens. Okay? You have to commit. You have to decide. Okay, I will do it, and then just do it. So next, the question is from Arisha Abdullah. How about self-esteem issues and problems with consistency and commitment? Self-esteem Can they is better. Have you ever thought of this, by the way? आज से 100 साल पहले सेल्फ स्टीम के इश्यूज नहीं होते थे लोगों को. The moment somebody came up with this label and people started buying it, accepting it, ये issues होना शुरू हो गए. Because that's how the brain works. कभी आपके साथ ये हुआ है ऋषा कि you thought कि मैंने फलाना मोबाइल लेना है, मैंने फलाने कपड़े बनाने हैं, मैंने फलानी गाड़ी लेनी है. And when you thought of it, then when आप road पे जहाँ पे गए, you start seeing people holding that mobile, and then people wearing those clothes, and sometimes आपको लगता है इसने मेरा idea चुरा लिया. Okay, and it's like you see those cars on the road. The reason it happens is because now it is in your consciousness, and your brain will start searching for it. This is what I was talking about. You have a structure, a perceptual structure. So ये जो self-esteem का concept है, it's just the same thing. Okay, but just to answer your question, can people with self-esteem be helped? Absolutely, most certainly. Okay, but don't buy into this idea of I have poor self-esteem. Yeah, we don't value ourselves as much as we should. The reason is because you're not aware. Think about this. अगर आपके घर में एक हीरे का सेट रखा हुआ हो, लेकिन आप उसको सारी जिंदगी शीशे का समझते रहे हो, तो कसूर आपकी समझ का है, उसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं हुई. सो आपने अपने आप की, जो अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, जो आपको दिया है, आपने उसको वैल्यू करने के बजाय devalued yourself, or anyone who may have done it, they will experience what is called self-esteem issues. There is no self-esteem issue. इंसान स्टीम पे नहीं चलते हैं. स्टीम इंजन पुराने जमाने में होते हैं, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है. ओके सर, the next सर 9:30 हो रहे हैं. अब आप बता दें सर कि हम कितनी देर और कंटिन्यू कर सकते हैं. as long as people have questions, Ramzan, I'll answer. Okay, it's okay. Sure. मेरे पास So the next question is from Amir Ali. Can we remove our fear from hypnosis? Absolutely, most certainly. Not only that, you can do it for yourself, you can help other people as well. Sir, आतिफ का ऊपर भी question था कि self limitations भी remove हो सकती हैं. Yes, absolutely. I help with those things. I work with those things. मेरे जो coaching sessions होते हैं, उसमें this is one of the things that I work with on regular basis. Yeah. So any other question? मुझे यहाँ पर question नजर आया था. NLP versus hypnosis. NLP is an advanced form of hypnosis. NLP includes hypnosis. When I asked this question to Dr. Richard Bandler, he's the founder of NLP, and उनके छोटा सा इसका interview की clip है मेरी website पे, अब मेरे YouTube channel पे आपको मिलेगी. You can watch that. But hypnosis, may you basically we use hypnosis in NLP as well. Okay, as one of the tools. So NLP के जो processes होते हैं, जब उनको, मेरी जो NLP की training होती है, मेरा NLP home study course है जैसे, when you learn that, you will learn hypnosis in that as well. Okay, so hypnosis का जो section है, it's part of my NLP home study course as well. मेरी classes में, since I've been teaching NLP for almost 25 years now. I've been teaching hypnosis in that. Richard Bandler, जो NLP के co-founder है, he teaches it that way. I teach that in the same way. Sir, Farah Shoaib is asking, can NLP improve emotional intelligence? Again, another label of emotional intelligence. Yes, the answer to your question, short, quick answer is yes.
It's like this. Once you understand what's the real source of your emotions are, so you go to the roots of things rather than the symptoms of things. You will understand, where those emotions are coming from. You will become intelligent enough to deal with them. Okay, you won't need those labels. Okay. Aisha's again asking the difference between NLP hypnosis. Aisha sir just answered it. I think you missed it. Sir, एक question है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा, but she's posting it again and again. Bushra Aman, can self-awareness by an individual could be taken as hypnosis? In other words, are they learned enough of knowing their own potential? Bushra, I don't understand what you're asking here. I don't understand either exactly. आप क्या पूछना चाह रही हैं? Can self-awareness I think rephrase करके लिखें. be taken as hypnosis? Anything can be taken as hypnosis if you want. Okay, so hypnosis, मैंने जैसे कहा जो basic definition, anything that we have accepted as truth, any idea that we have accepted, good or bad, doesn't matter. Okay, that's a process. So if a person has this idea, I am really confident and I'll be successful for whatever reason he has or she has that idea, that's hypnosis, that's self-hypnosis. If a person on the other hand is telling himself, jo self-esteem ki baat, oh, I will never do anything, I don't amount to anything, that's also self-hypnosis. Okay, and so a person has an awareness of having a certain value or certain quality, or awareness of not having a certain value, that's self-awareness. Okay, so knowing who you are, basically, that's your awareness. Sir, this one I think is interesting. Sahito Khan, what is the link between hypnosis and mindfulness? Mindfulness इस वक्त जो एक term use हो रही है, meditation, it's like मेरा अगर आपने advanced NLP का जो course है उसमें हम एक exercise करते हैं, this is basically expanding your consciousness. So mindfulness is a very small part of that. It's like about being aware of where you are. Hypnosis में, NLP में हम दो terms use करते हैं. एक चीज हम कहते हैं up time, एक होती है down time. ये दोनों ट्रांस की ही कैफियत होती है. अप टाइम ये होती है जब आपकी जो अवेयरनेस है वो एक्सटर्नली ओरिएंटेड है, और डाउन टाइम ये होती है कि जब आपकी अवेयरनेस जो है वो इंटरनली ओरिएंटेड है. सो हिप्नोसिस में इंसान डाउन टाइम में होता है, माइंडफुलनेस एज आई अंडरस्टैंड उसमें आप अप टाइम में होते हैं, और हम इन दोनों स्टेट्स को यूटिलाइज कर रहे होते हैं. Right, sir. So these were all the questions. Cool, great. Thank you very much, everyone. So thank you, Iram. Thank you very much. Thank you, sir. So before from you. Thank you very much, Ramzan. And I hope to see a lot of people here who are interested in improving their lives, improving, helping themselves and helping other people, and understand hypnosis, what it really is, and what it can really do. I hope to see a lot of people who want to understand themselves better. Okay, so I hope that all of you will be there. Thank you, everyone. Thank you, Ramzan, and thank you again. So inshallah ta'ala, we'll stay in touch. हमारा जो WhatsApp पे ग्रुप है, I'll keep that group, और उसको जिस तरह से इसी तरह से हम रखेंगे, and we'll keep posting some information on that way. ओके सर, ओके फ्रेंड्स, कामरान सर बहुत शुक्रिया, इरम और तमाम पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने इतना कीमती वक्त दिया. आई एम श्योर आप बहुत कुछ आप सीख चुके होंगे, बहुत कुछ आप लेके जा रहे होंगे, और मजीद भी सीखना जारी रखेंगे. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बूट कैंप वाले दिन, जनवरी 6, 7 और 8 को. नए साल, नई मालूमात, नई लर्निंग और नई जिंदगी. आपको मुबारक हो. जिंदगी रही तो मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.